Hello friends, in previous lecture we discussed about the general introduction of biology subject. Now today we discuss about our biology subjects and first chapter living worlds. In our biology subjects there are 5 units and by which we study the 16 chapters. Now अब हम देखते हैं कि पहला यूनिट कौन सा है। पहला यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड्स। इन डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड्स देयर आर 4 चैप्टर्स, दैट इज लिविंग वर्ल्ड, सिस्टमेटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमलिया। आउट ऑफ 4 चैप्टर आई विल टीच यू 3 चैप्टर्स, दैट इज लिविंग वर्ल्ड, सिस्टमेटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किंगडम प्लांटे। Then next unit है cell structure and function, in which there are 3 chapters, that is cell structure and organization, biomolecules and cell division. I will teach you only one chapter, that is cell division. Next unit है structural organization in organism. In this unit there are 4 chapters, that is plant tissue and anatomy, morphology of flowering plants, animal tissue, in which I teach you plant tissue and anatomy and morphology of flowering plants. Then next unit है plant physiology, in which there are 2 chapters, that is photosynthesis and respiration and energy transfer. I teach you 2 chapters, photosynthesis and respiration. Then next chapter animal physiology, in which there are 3 chapters, that is human nutrition, excretion and osmoregulation, skeleton and movements. That chapters teach you भारती मैम। आप सभी लोग समझ गए होंगे कि 16 चैप्टर में से 8 चैप्टर आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ और 8 चैप्टर मैडम आपको पढ़ाने वाली है। मैं कौन से चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, सेकंड सिस्टमेटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, थर्ड किंगडम प्लांटे, फोर्थ सेल डिवीजन, देन plant tissue and anatomy, next morphology of flowering plants, photosynthesis, respiration and energy transfer। 8 चैप्टर आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कोविड-19 की वजह से अपना जो 100% सिलेबस है उसमें से 25 सिलेबस रिड्यूस किया गया है। ओनली हम 75% सिलेबस पढ़ने वाले हैं चैप्टर में से। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही रिड्यूस किए गए हैं। तो कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक रिड्यूस किया गया है, जब चैप्टर हम पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये चैप्टर में से कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे और कौन सा नहीं। तो हम आज से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर में हम सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड की। ये टॉपिक हम पढ़ने वाले नहीं हैं, सिर्फ एक ही टॉपिक ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और वो चैप्टर का टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। तो हम पढ़ते हैं लिविंग वर्ल्ड्स। आप लोग 10th क्लास में लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। आप लोगों को पता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग क्या है। आप उसमें दोनों में से डिफरेंस बता सकते हैं और डिफरेंस की वजह से आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर एनलिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दोनों ऑर्गेनिज्म के आप सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ इजीली बोल सकते हैं, इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। तो हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में अब क्या है ये देखते हैं। लिविंग वर्ल्ड, हम जो प्लैनेट पे रहते हैं वो अर्थ प्लैनेट 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, एक बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। ये प्लैनेट के ऊपर अपने सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ में से कोई कंपोनेंट्स जो है वो कंपोनेंट
एक जगह पे स्थिर है, वो दूसरी जगह पे हम उठा के ले जा सकते हैं, वो खुद अपने आप नहीं जा सकता, यानी कि उसमें मूवमेंट नहीं होता है, माइग्रेशन नहीं होता है। और दूसरा कि उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, यानी कि उसमें ग्रोथ फॉर्म नहीं होती है, और उसके बाद उसमें रिप्रोडक्शन वो अपने जैसा ऑर्गेनिज्म या अपने जैसा प्रोडक्ट नहीं बना सकता है, इसलिए वो अलग कंपोनेंट्स हो गया, और जिसमें मूवमेंट हो रहा है, जिसमें ग्रोथ हो रहा है, जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो अलग कंपोनेंट हो गया। अभी जिसमें मूवमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, और जिसमें नहीं होता उसे हम अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो अबायोटिक का मीनिंग क्या हुआ? लिविंग। अबायोटिक का मीनिंग हुआ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, एंड बायोटिक का मीनिंग हुआ लिविंग कंपोनेंट्स। तो फिर अपना ये प्लैनेट है, ये दो कंपोनेंट से बना है जो अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं। जो नॉन लिविंग है वो माउंटेन है, सनरेज है, वाटर है, और जो लिविंग है यानी कि जो बायोटिक है वो प्लांट्स है, एनिमल्स है। अभी ये दो कंपोनेंट्स है, ये दो कंपोनेंट्स हम यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये क्या है, इसमें सिमिलरिटीज क्या है, डिसिमिलरिटीज क्या है, हम कैसे बता सकते हैं कि ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है। तो अभी हम ये जो लिविंग है तो फिर इसके स्पेशल कैरेक्टर क्या है, यानी कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, ये हम अभी देखेंगे। तो हम ये लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है लाइफ, तो ये लाइफ के प्रिंसिपल क्या है, यानी कि उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, ये अभी हम पढ़ेंगे। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्पेशल प्रॉपर्टीज फॉर्म करते हैं, वही उनके लाइफ के बेसिक प्रिंसिपल है। वो प्रिंसिपल है नीड्स ऑफ एनर्जी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स एंड लोकोमोशन। फर्स्ट है नीड्स एनर्जी। फॉर सर्वाइवल वी नीड एनर्जी एंड मेनी केमिकल मॉलिक्यूल्स। अभी हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो न्यूट्रिशन में से हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से हम केमिकल मॉलिक्यूल्स से वो फॉर्म होती है। अपने बॉडी में केमिकल्स मॉलिक्यूल जो फॉर्म होता है, एटीपी फॉर्म होता है न्यूट्रिशन की वजह से। तो वो जो न्यूट्रिशन है वो उसमें से हमें एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है एनर्जी? कि वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म फॉर्म करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म एक ब्रेकिंग और मेकिंग एक्टिविटीज़ है। ब्रेकिंग का मतलब है कैटाबॉलिज्म, और मेकिंग का मतलब है एनाबॉलिज्म। जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसे ब्रेक डाउन किया, उसमें से एनर्जी फॉर्म की, यानी कि केमिकल एनर्जी में एटीपी फॉर्म किया, तो उसे बोलेंगे हम कैटाबॉलिज्म। लेकिन जो अपने पास नहीं है वो हम फॉर्म करेंगे, उसे बोलेंगे एनाबॉलिज्म। जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि वो मेकिंग फॉर्म होता है, फूड मॉलिक्यूल्स तैयार होता है, तो उसे बोलेंगे एनाबॉलिज्म। और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस फॉर्म होती है, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन किया जाता है, उसमें से एटीपी फॉर्म होता है, तो उसे बोलेंगे हम कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों रिएक्शन एक साथ फॉर्म होती है, उसे रिएक्शन को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ। फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स ऑर्गेनिज्म शोज टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सभी ऑर्गेनिज्म में, सभी लिविंग थिंग्स में ये प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहती है जो उनकी टेंडेंसी है, जो उनके फॉर्म होने से ऑनवर्ड तक चलती है। ये प्रोसेस कैसी होती है कि सेल डिवीजन जो फॉर्म होता है बॉडी के अंदर, उसमें सेल इंक्रीज होता है और वो ग्रोथ फॉर्म करता है। जो यूनिसेल्युलर सेल है उसमें वो रिप्रोडक्शन फॉर्म करता है, और जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों फॉर्म करता है। इसलिए ग्रोथ इज वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस। देन नेक्स्ट, you might have observed sand mounds, boulders grows etc. मीन्स क्या है कि जो ग्रोथ है वो नॉन लिविंग थिंग में भी फॉर्म होते हैं, जैसे कि माउंटेन है। उसमें क्या होता है कि सैंड एक जगह पे एक्यूमुलेट होता है और उसकी ग्रोथ बढ़ती है। हम माउंटेन फॉर्म होते हुए देखते हैं तो उसको भी हम ग्रोथ बोल सकते हैं। लेकिन ग्रोथ वो कैसी है? वो
बाहर से दिखने वाले एक्यूमुलेशन फॉर्म हो रहा है वहाँ पे जो ग्रोथ है वो बाहर से दिख रहे हैं, अंदर से नहीं है। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से होती है और नॉन लिविंग के अंदर बाहर से एक्यूमुलेशन फॉर्म होता है, उसे भी ग्रोथ बोल सकते हैं। इसलिए ग्रोथ ये प्रॉपर्टी है नॉन डेफिनेटिव प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों में बोल सकते हैं, इसलिए नॉन डेफिनेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है कि ग्रोथ जो है नॉट फ्रॉम विद इन एंड हेंस देयर आर नॉट लिविंग बींग्स। जो ये ग्रोथ जो है वो अंदर नहीं फॉर्म होती, इसलिए नॉन लिविंग थिंग में वो नॉन इंसेंट्रिक है और लिविंग थिंग में अंदर फॉर्म होती है, अंदर से फॉर्म होती है, इसलिए वो इंसेंट्रिक है। उसके बाद दिस इज एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। ये जो प्रोसेस है ग्रोथ, जो हम आज बच्चे हैं तब फॉर्म हुई तो हमारी ग्रोथ होती है, तो हमारे लेग्स में बढ़ोतरी होती है, हैंड में बढ़ोतरी होती है, सभी पार्ट्स अपने डेवलप होते हैं। लेकिन एक लिमिट आता है, एज फॉर्म होता है, और लिमिट में हमारी जो एक हैंड नहीं बढ़ता है। अगर आज तक हम देखते हैं कि तुम लोग छोटे थे और जब तुम बड़े हो गए अभी, तो तुम्हारी हैंड की जो साइज है वो वैसे की वैसे है। अभी ज़्यादा बड़ी है क्या? नहीं बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ एक डेफिनेट टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है, सिर्फ उसके अंदर सेल का इंक्रीजिंग होता है और डैमेज होते हैं, बाद में वापस सिर्फ इंक्रीजिंग होता है, लेकिन बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होता है, बॉडी का ग्रोथ नहीं होता है। इसे बोलते हैं एजिंग प्रोसेस ऑफ बॉडी। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। लिविंग बीइंग कैन रिप्रोड्यूस फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रेस। ये जो लाइफ का रेस है उसमें लिविंग बीइंग अपना लाइफ कंटिन्यू करने के लिए खुद अपने जैसा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। लाइफ हैज़ टू कंटिन्यू, हेंस द ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू प्रोड्यूस यंग वन लाइक इटसेल्फ। यानी कि लाइफ कंटिन्यू करने के लिए वो अपने जैसा दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जिसकी वजह से लाइफ की कंटिन्यूटी फॉर्म होती है। इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू द रिप्रोडक्शन। ये प्रोसेस किसकी वजह से होती है? रिप्रोडक्शन की वजह से होती है। रिप्रोडक्शन टू टाइप के होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म रहता है, वो अपने जैसा आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहते हैं। टू ऑर्गेनिज्म अपने गैमेट्स जो है एक्सचेंज करते हैं और दोनों एक्सचेंज करने के बाद वो अपने जैसा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है उसमें डाइवर्सिटी फॉर्म होती है और डाइवर्सिटी की वजह से ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन फॉर्म होता है और लाइफ कंटिन्यूटी फॉर्म होती है। लेकिन रिप्रोडक्शन के अंदर सम ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स हैं? जैसे कि म्यूल्स है, स्टेराइल वर्कर्स बीज है। तो म्यूल्स क्या है? म्यूल्स एक डोंकी और हॉर्स, ये दोनों का, यानी कि अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व रहते हैं, म्यूल्स, डोंकी और हॉर्स का, दोनों से फॉर्म हुआ स्टफ। ये म्यूल को हम हिंदी में बोलते हैं खेचर। खेचर आप सब लोगों को पता है, लेकिन ये म्यूल जो है सिर्फ लाइफ कंटिन्यूटी फॉर्म करता है, लेकिन इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता नहीं है। तो क्या हुआ कि वो लिविंग प्रॉपर्टीज फॉर्म कर रहा है, सिर्फ रिप्रोडक्शन फॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए ये ड्रॉबैक्स है रिप्रोडक्शन का। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, लेकिन ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लाइफ फॉर्म करने के लिए उसे रिप्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ रिप्रोडक्शन फॉर्म नहीं होता है इसलिए वो लिविंग नहीं है ऐसा समझ नहीं सकते, इसलिए रिप्रोडक्शन ये भी नॉन
डेफिनेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो स्टेराइल वर्कर हैं, जो हनी बीज हम देखते हैं, उसमें एक क्वीन रहती है और सभी वर्कर प्रेजेंट रहते हैं। जो वर्कर बीज जो रहती है वो भी स्टेराइल रहते हैं। स्टेराइल का मतलब कि वो अपने जैसा रिप्रोडक्शन फॉर्म नहीं कर सकते, तो लेकिन वो लाइफ तो फॉर्म करते हैं, वो भी लिविंग थिंग है। ये भी ड्रॉबैक्स है रिप्रोडक्शन का, इसलिए रिप्रोडक्शन है नॉन डेफिनेटिव प्रॉपर्टी। एज द body loses its capacity to form metabolism, the organism dies। अभी ये रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है कुछ एज तक ही प्रेजेंट रहती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन लाइफ में कंटिन्यूटी फॉर्म करती है। लाइफ के अंदर मेटाबॉलिज्म फॉर्म होता है और कुछ टाइम के बाद ऑर्गेनिज्म में डाइज हो जाता है। इसका मतलब रिप्रोडक्शन ये नॉन डेफिनेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म की टेंडेंसी होती है कि वो स्टिमुलस एक्शन को रिस्पॉन्स दे। जैसे कि हमें चींटी ने काट लिया तो हम तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। पानी गर्म है या ठंडा है, ये कैसे जानते हैं हम? ये सब हम कुछ खा रहे हैं, वो मीठा है, तीखा है, खारा है, ये कैसे जानते हैं? ये एक हमारा रिस्पॉन्स एक्शन होता है। प्लांट में हम देखते हैं कि सनलाइट लाइट की तरफ झुकते हैं, जैसे कि सनफ्लावर है। हमने टचिंग प्लांट देखा है कि टचिंग प्लांट के बारे में हमने सुना है, तो टच करने से उसकी जो लिप है वो अपने आप क्लोज हो जाती है। तो ये क्या हुआ? ये सब हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम, और स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उसका नेक्स्ट है लोकोमोशन। एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ये हमारा लोकोमोशन हो गया। लेकिन यानी कि मूवमेंट हुआ। प्लांट के अंदर भी हम मूवमेंट देखते हैं, जैसे एनिमल के अंदर भी मूवमेंट होता है और माइग्रेशन होता है। ये सभी क्या है? ये सभी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है, प्रिंसिपल लाइफ के बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। और ये बेसिक प्रॉपर्टी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहती है, वो कंपल्सरी उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। इसलिए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। The world consists of both the living and the non-living. But how do we segregate the two? We can do so by looking out for certain characteristics associated with living organisms. However, these characteristics can be definitive or non-definitive. One such characteristic is growth. Living organisms, whether multicellular or unicellular, grow due to cell division. However, cell division affects these organisms differently. In a multicellular organism, cell division results in an increase in mass, whereas in a unicellular organism like amoeba, it leads to the formation of two new organisms. Interestingly, plants grow through cell division throughout their lifespan, while animals, including humans, grow up to a certain age. After that, cell division occurs only when the body has to replace lost cells in certain tissues. However, everything that grows cannot be said to be a living organism. Take the example of a rock that will grow in size if sand gets deposited over it. However, this growth is external. On the contrary, growth in living organisms is internal. Growth is, thus, a characteristic feature of living organisms, though it is a non-definitive one.
reproduction is another important characteristic of living organisms. In unicellular organisms, reproduction and growth are synonymous, as both lead to an increase in the number of cells. This is not the case with multicellular organisms, where reproduction leads to the creation of an offspring. These organisms reproduce either sexually or asexually. Sexual reproduction can be seen in higher organisms like man and animals. Asexual reproduction can be seen in lower organisms through budding as seen in yeast, or through fragmentation as observed in flatworm. However, certain organisms, such as sterile worker bees, are not capable of reproducing. But that doesn't mean they are non-living. Reproduction is therefore not a definitive characteristic of the living. Metabolism is also a characteristic of living organisms. We know that organisms are made up of chemicals. These chemicals are constantly produced in living beings and converted into biomolecules. These conversions are called chemical or metabolic reactions. The sum total of all such reactions is known as metabolism. It is interesting to note that such chemical reactions can also be imitated in a laboratory. However, such isolated reactions taking place in vitro are not considered living organisms, but are classified as living reactions. We can therefore state that metabolism is a definitive feature of living organisms. Cellular organization is another important characteristic of living organisms. Such organization is not observed in the non-living, and hence cellular organization is also a definitive feature in all life forms. Consciousness is another feature associated with living organisms. We know that all living organisms sense and respond to environmental stimuli such as light, water, and temperature. For instance, a sunflower always faces the sun. Humans too respond to environmental stimuli and are aware of their surroundings and themselves. For instance, in winters, they wear woolens to keep their bodies warm. Non-living objects don't respond to external stimuli. Consciousness is therefore another definitive characteristic of a living being. Thus, we can say that metabolism, cellular organization, and consciousness are the three definitive characteristics of living organisms. Earth is a diverse planet with millions of different types of fungi, plants, microorganisms, and animals. The range and diversity of living organisms increases as we increase the area of our observation. Each different kind of plant, animal, or organism represents a species. In other words, species is a group of similar individuals sharing a common gene pool and interbreeding freely, producing fertile progeny. Today, there are about 1.7 to 1.8 million species known to us, and this number is ever increasing as we explore new areas along with the old ones.
the number and types of living organisms on the earth is referred to as biodiversity. It is common to find living organisms being known by different local names in different parts of the world. To avoid this confusion, the name of a living organism must be standardized such that it is known by the same name the world over. This process is known as nomenclature. However, to name an organism, we need to know its correct description and to what organism the name is attached to. This is known as identification. To make the process of identification easier, scientists have assigned a scientific or biological name to every known organism. The scientific names for plants are based on the principles and criteria given in the International Code for Botanical Nomenclature, or ICBN, and for animals in the International Code for Zoological Nomenclature, or ICZN. The procedures to assign a scientific name to an organism have been agreed upon by scientists and biologists all over the world. Scientific names help avoid ambiguity as each organism has just one name. However, certain universal rules are followed while providing a scientific name to a known organism. For example, the scientific name for the sacred fig, commonly known as the peepal tree in India, is Ficus religiosa. Here, as you can see, the scientific name has two components: the generic name and the specific epithet. Ficus represents the genus or the generic name, while religiosa denotes the specific epithet. This system of representing a name with two components is called binomial nomenclature and was devised by Carolus Linnaeus, also known as the father of modern taxonomy. Sometimes, the name of the author who first described the species is written at the end of the specific epithet. For example, in Ficus religiosa Linn, Linn is the abbreviated name for Linnaeus. Moreover, scientific or biological names are generally in Latin or derived from Latin, irrespective of the origin of the organism. Also, when a scientific name is handwritten, both the words in the name are underlined separately, whereas when printed, it is in italics to indicate its Latin origin. Finally, the first word of the genus starts with a capital letter, and the specific epithet starts with a small letter. Apart from assigning scientific names to living organisms, they must be aptly organized for easy study. The process of grouping anything into convenient categories based on easily observable characters is known as classification. For example, plants, animals, roses, flowers, and dogs are groups that we can easily recognize. Each group has specific characteristics and are convenient categories that help us to study organisms. The scientific term given for these categories is taxa. Here, each of the groups, namely mango trees, apple trees, neem trees,
cats and dogs are all taxa. However, cat is a mammal, and all mammals come under animals. Therefore, a cat, mammals, and animals represent taxa at different levels. This process of classifying living organisms into different taxa based on their characteristics is called taxonomy. Taxonomy isn't new to humans. For ages, humans have been interested in knowing about different types of organisms and the relationships among them. This branch of study is known as systematics, which means systematic arrangement of organisms. However, today, systematics also includes the identification, classification, nomenclature, as well as evolutionary relationships among organisms. Therefore, in this diverse world, it is important to classify and name living organisms for their easy identification and study. Our Earth is a habitat of millions of plants and animals, and new species are being discovered every day. In order to group these plants and animals based on observable characters, several taxonomists have classified them in a hierarchical structure that consists of ranks or categories. Every category is referred to as a unit of classification and is commonly termed as taxon. Since a category is a part of the taxonomic arrangement, it is known as a taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Although the classification of living organisms seems difficult, you need to have a good knowledge of the characters of an individual organism or a group of organisms to classify them. This also helps you identify the similarities and dissimilarities among the same and different kinds of individual organisms. Organisms are classified using common categories such as kingdom, phylum or division, class, order, family, genus, and species. These taxonomic categories are also known as broad categories. Species is the basic rank in a taxonomic category. It is a group of individual organisms with fundamental similarities. You can distinguish one species from another closely related species based on morphological characters. Think of the varieties of mangoes available in the market, or the different species of rose in the garden. The next rank is genus, which consists of a group of related species that exhibit similar characteristics in comparison to species of other genera. In case of plants, the banyan and peepal trees have certain similarities, and therefore belong to the genus Ficus. Among animals, the lion, the tiger, and the leopard are closely linked, and thus are in the genus Panthera. However, the genus Panthera differs slightly from another genus, Felis, which includes cats. The next rank or category is family, which consists of a group of related genera with fewer similarities as compared to genus and species. For example, orange, lemon, and grapefruit belong to the family Rutaceae or the citrus family. Likewise, the lion, the tiger, the leopard, and the cat fall into the family Felidae. Although a cat and a dog exhibit some similarities and some differences, they are separated into two different families, Felidae and Canidae, respectively. Order is the next category, which is a collection of related families. However,
the number of similarities is less than that seen in a family. For example, the order Lepidoptera includes butterflies and moths belonging to the families Papilionidae and Tineidae, respectively. Similarly, families like Felidae and Canidae are included in the order Carnivora, while plant families like Convolvulaceae and Solanaceae are included in the order Polynomials on the basis of floral characters. The next category is class, which consists of related orders. Consider the two orders Primata and Carnivora. Order Primata includes the monkey, the gorilla, and the gibbon, while order Carnivora includes animals like the tiger, the cat, and the dog. Although these two orders are different, they are classified under the class Mammalia. Phylum or division is the next category. Animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, and mammals have common features like the presence of notochord and a dorsal hollow neural system, and are thus categorized as phylum Chordata. Similarly, all flowering plants are categorized under the division Angiospermae or Magnoliophyta. The highest taxonomic category is kingdom. All animals are put under kingdom Animalia, and all plants fall under kingdom Plantae. So, as we go higher from species to kingdom, the number of common characters goes on decreasing. Thus, by observing the characteristic features of an individual organism, taxonomists have classified living organisms into different taxonomic categories. Our planet is filled with numerous living organisms. To simplify the study of these organisms, they are classified into convenient categories based on their characteristics. This classification process is known as taxonomy. Taxonomic studies require careful identification of the organisms, for which intensive laboratory and field studies are carried out, and actual specimens of plant and animal species are collected. These studies help in disciplines such as agriculture, forestry, industry, and in knowing the biodiversity. Over the years, biologists have developed many methods and techniques that help in taxonomic studies. These are also known as taxonomical aids. Herbariums, botanical gardens, museums, zoological parks, and quays are some examples of taxonomical aids. Let's learn a little more about these aids. A herbarium is a storehouse where a collection of dried plant specimens are mounted on sheets, labeled, and systematically arranged based on the universally accepted system of classification for use in scientific study. Details like the date and place of collection, the English, local and botanical names, the family of the specimens, and the collector's name are also recorded. These herbarium specimens are often used as reference material in taxonomic studies. Another place that provides taxonomical aid is a botanical garden. A wide variety of plants are cultivated in these gardens for scientific research, conservation,
display, and education. Each plant is labeled with its botanical or scientific name and family. Some of the famous botanical gardens are at Kew in England, the Indian Botanical Garden in Howrah, and the National Botanical Research Institute in Lucknow. Biological museums, set up in educational institutions, also act as taxonomical aids. These museums have collections of preserved plants and animals, which are used for study and reference. They are preserved in jars using preservative solutions or as dry specimens. Insects are collected, killed, pinned, and then preserved in insect boxes. Larger animals are typically stuffed and preserved, or their skeletons are displayed. Zoological parks or zoos also help in taxonomical studies. These places house wild animals in protected environments similar to their natural habitats, under human supervision. An animal's food habits and behavior can be studied here. A biological key is another taxonomical aid used for the identification of plants and animals. It is a list of questions that help identify and classify a living organism. Each question presents contrasting characters of an organism in a pair called a couplet. To classify the organism, the character similar to the organism has to be chosen. So in a couplet, one character is accepted and the other is rejected. Answering the questions in this analytical manner helps in identifying the organism. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category, such as family, genus, and species, for the purposes of identification. Other taxonomical aids like flora, manuals, and monographs are also used. A flora is a document that contains information about the plants of a particular country, region, or time. Manuals provide information that helps in the identification of the names of plant and animal species found in a specific area. A monograph is a written account or description of a single taxon. It provides detailed information about a particular species and how it fits in with the overall taxonomy and classification. In today's scenario, when many plant and animal species are endangered, taxonomical aids play a crucial role in studying the important facets of living organisms and saving important information about them for future reference.